Yeah. First of all, good evening, everyone. Yeah, how many of you were present on the orientation day? Okay. So, a very glamorous introduction was given about me. Right. So, today, let's have now, no filtered introduction first. Let's remove the makeup and face the real facts. Right. So, first and foremost, the introduction that we will have will be especially for a few new students that I'm saying, and many of you I've already interacted in SFM, but there are quite a few new faces. So first, let's start with a little bit of introduction about myself. And then, of course, we will introduce the subject as well. And don't worry, I'll not ask you guys to introduce yourself. बहुत time है हमारे पास एक दूसरे को जानने के लिए, right? So we will definitely learn about each other as the syllabus progresses, right? But first, yeah, I myself, Ashish Kalarji, I hope you know my name, right? And I cleared my chartered accountancy in 2001. So it was May 2001. I cleared all the levels of CA in the first attempt. But from the very beginning, I was very much inclined in teaching, right? So that was basically something that I was always interested in. So irrespective of what I would have studied, right? Eventually, I would have gone into this profession only. So from a very young age, I was very keen on teaching. My father is also a teacher, so maybe that might be the reason. He is a, what you can say, chemistry teacher. While I went for, instead of science, I went for commerce. But teaching was something that I was very interested in. वो था ना वो school days में ऐसे आता है, right? Schools में पूछता ना, what will you like to be once you grow up? आता था आपके schools में ऐसा कभी ऐसा लिखना? How many of you had written you want to be CMA? Yeah. No one? I don't think it's in a BCom bhi likha hoga. So at that time, I think we wanted to be a doctor or maybe a pilot or an astronaut. I don't know. Isn't it? Because I have my son, he's 12 years, और उसका career every 5-6 दिन बदल जाता है. So it just keeps on. अभी उसको NASA में जाना है. I don't know. But when I ask him, you want to go to NASA, what do you want to do? नहीं, मुझे astronaut नहीं बनना है. NASA की ऑफिस में काम करना है. मतलब ये this is altogether another level that we really realize. अभी वो बीच में उसको chef भी बनना था. So he was like, I want to be a chef. So that's really great. I was like, why you want to be a chef? कि उसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा. And then I had to really tell him कि उसमें भी hotel management का course आता है, वो भी करना पड़ता है, उसमें भी पढ़ना पड़ता है. And he got very disappointed. कि यार chef बनने के लिए भी पढ़ने, isn't it? So that is how it is. But yeah, what I'm just trying to say is that even during that time, I was always writing that I want to be a teacher. This is how those essays used to be. मुझे teacher बनना है. क्या पढ़ाऊंगा? कोई clarity नहीं है. But this is what I'm really interested in. So teaching is something which I have been passionate about from a very young age. I cleared, as I said, my chartered accountancy, and then I immediately plunged into coaching. और फिर वो student का होता है ना जो एकदम end में पढ़ते हैं वही याद रहता है. So वो CA final अभी एकदम fresh हुआ था ना, तो I was like चलो CA final के classes शुरू कर देते हैं, and that's how I really went into the coaching, and it's going on, and now I am in this new avatar of teaching CMA final as well.
So yes, my journey, the last batch, it was really amazing, and I'm sure that same thing will continue even this time, isn't it? New place, new enthusiasm, probably, right? So it will be really nice that you keep on, what I can say, turning up regularly. We want these classes to be offline as far as possible. So please ensure that you are coming regularly. I'll be coming. If I'm given a choice between offline, online, I'll always go for offline classes because I get a lot of energy, when I look at the students. And I hope you guys also feel the same, right? That when the teacher is there, you really feel like studying. Otherwise, a lot of side activities can also keep on going on, when we are studying back at home. So that is what I can say in brief, what will say my background is. As far as your subject is considered, corporate financial reporting, your syllabus 2022 is what I'm dealing with. Over here, everyone is for syllabus 2022. या अभी भी थोड़ा confusion है कि 2016 में है हम या 2022 में है या कोई चीट उठाने की है अभी, लेकिन वो उठाने का बाकी है अभी, 2016 करे या 2022 करे. How many of you are clear that it's 2022? Okay. So basically it's, what about you? नहीं, वो तो धीरे धीरे जानेंगे. 2016, 22? Right now 2016? मतलब कंफर्म है तुम्हारा 2016 ही कि थोड़ा कंफ्यूजन है? 2016 ही है. ओके, तो मैं तो 2022 करने वाला हूँ. What about you? 2016? Then क्या करेंगे? Because what I am going to do today, see, we can then, we can say, I'll have a talk with sir and we'll try to figure out कि 2016 का क्या करने का है. But today's lecture is all devoted to 2022. मैंने लिख भी दिया, right? Introduction to India's. Anyways, वो 3 idiots में था ना, कोई भी class waste नहीं जाता, तो attend कर लो. So whatever knowledge that you are getting about India's, that also is making a lot of sense. Even during the orientation also, I had said that as of now, what I can say, understanding knowledge of India's is a must. So if you have a choice of switching over, then you should definitely exercise that. You may have your own compulsions, of course. As a student, we may have our own compulsions and our own way of thinking. But as far as knowledge building is considered, what we need right now is thorough understanding of Ind AS, because that's the latest set of accounting standards which the market in general demands. मतलब आपको Ind AS करना तो पड़ेगा ही. See, understand one thing. 2016 में एग्जाम देने के बाद, once you clear CMA, उसके बाद आपको Ind AS सीखना पड़ेगा. करना तो सभी को पड़ेगा ही, क्योंकि that is the requirement which is of the market. Of course, in future, all of our, what you can say, learning depends upon in what field we really move ahead. But still, at the entry level, thorough understanding of Ind AS will be essential. So don't worry, even if you are appearing in 2016, there's no harm in getting introduced to the Ind AS, right? And then we'll try to work out something कि क्या exactly कर सकते हैं. If there is any common ground, in the two syllabuses, we can figure that thing out. But still, let's try to understand what do we mean by the Ind AS. So the Ind AS, basically it is a short form for Indian Accounting Standards. So we have shortened it to the Ind AS. But the most basic question that really arises is that what is the need of Ind AS? Already accounting standards तो है, आपने CMA इंटर में भी accounting standards तो थोड़े बहुत पढ़े हुए ही हैं, right? So you already have a set of accounting standards. So फिर उसको disturb करके
what is the need of bringing a new set of accounting standards? And even if there is a new set of accounting standards, who exactly is supposed to implement these accounting standards? But we first start with the most basic question, और ये question हमेशा आएगा ही कि क्या जरूरत थी एक नए set of accounting standards लाने के लिए, जब already इतने सालों से इंडिया में accounting standards already है. It's not like that Indian companies were not following accounting standards. Since very long, Indian companies have been following accounting standards for the preparation of financial statements. And why Indian companies? Actually, partnership firms, proprietary concerns, सबको accounting standards follow करना है. Real life में कुछ खास लोग follow नहीं करते, वो अलग बात है. Otherwise, they are all expected to follow the accounting standards. So what is the need? What is the objective of bringing this new set of accounting standards? Well, the idea is that don't we should have a common accounting language the whole world? What do you say? Is English the same all over the world? Or does it keep on changing? The accent may change, but do the words and their meanings change? No. Does laws of science keep on changing from country to country, or does it remain the same? Remains the same? It is said na, एक story है ना वो न्यूटन की, that कितना सही है, no one knows, that he was sitting under a tree, apple tree, and an apple fell, and he was like, wow, this is the law of gravitation, isn't it? So he discovered the law of gravitation. That is the story that it said. Just imagine for a moment that Newton was sitting, let us say, in Vadodara, let's say, MS University, under some tree under MS University. Of course, MS University में कोई apple tree नहीं है, लेकिन let us say he was sitting under some tree, some fruit tree. Will the same thing would have happened? Would the fruit still have fallen on the ground? Would have he still discovered the law of gravitation? या आपको लगता है कि नहीं, इंडिया में बैठा है? Something else is definitely possible. कि वो नीचे आए ही नहीं और डायरेक्ट ऊपर चला जाए या कहीं बीच में ही रह जाए. Is it possible? So what is really happening is that the law of gravitation, or any, for that matter, any law of science is the same all over the world. तो फिर accounts क्यों अलग है? Why is it that accounts is prepared in different ways in different countries? Of course, the rules of debit and credit are remaining the same. Agreed. वो so universal रहेगा. But the way we prepare financial reports, it keeps on changing from country to country. कोई एक्सपेंस फॉर एग्जांपल है तो इंडिया में ऐसा कहते हैं कि नहीं, ये एक्सपेंस को है ना हमें कैपिटलाइज करना है. कोई कंट्री कह रहा है कि नहीं, एक्सपेंस को आपको P&L में डेबिट कर देना है. कोई कंट्री कह रहा है कि नहीं, इसको कैपिटलाइज भी नहीं करना है, इसको डेबिट भी नहीं करना है, इसको तो एमोर्टाइज करना है, इसको पहले डिफर करो एंड देन एमोर्टाइज इट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 or 5 years. Why? Some countries are saying ये आपकी इनकम है, इसको P&L में क्रेडिट कर दो. some countries are saying कि नहीं, ये इनकम नहीं, इसको कैपिटल रिजर्व में ले दो. Why is it that we are preparing financial statements in different ways in different countries? Why can't we have one uniform accounting language? Don't you really feel that that is really required? That every company which is located in any country, their financial statements are comparable? उनका एक ही तरीके का format हो, and because they have a common format and because they are following similar types of accounting policies, I can even compare those financial statements. Don't you really feel so that it should be all uniform? Isn't it? So we really require a uniform set of accounting policies, and that is the job that India is going to achieve. We really want to ensure that we have a global accounting language. And just imagine for a moment कि अगर ऐसा हो जाए, gradually we are moving towards that. But if something like that actually happens, the mobility of an accountant will increase like anything. What do you say? Whether you are an accountant in India, or you are an accountant in Gulf country, or you are an accountant in US,
It's all the same क्योंकि सारे के सारे accounting standards all over the world are actually the same. अभी क्या होता है, we have to unlearn कि US में ऐसा नहीं कर सकते, US में तो इस तरीके से accounts बनाना है. So what is happening is we are adding layers. अकाउंट्स में ही हम लेयर्स बना रहे हैं कि इंडिया में अकाउंटिंग हो तो ऐसे करने का, यूके में जाओगे तो ऐसा करना पड़ेगा, गल्फ में जाओगे तो ऐसा करना पड़ेगा, यूएस में जाओगे तो ऐसा करना पड़ेगा. व्हाई शुड इट बी लाइक दैट? We should have accounting language which is common all over the world, and that is the main intention. This is a thought process of International Accounting Standard Board. IASB came up with a project that every country should have a uniform set of accounting policies. All over the world, हमें same ही accounting policies चाहिए. So this was their idea, and they started having meetings with officials of different governments. अलग-अलग country के government officials, उनके साथ उन्होंने meeting करना शुरू किया, because at the end of the day, accounting standards are notified under different laws. They are legally applicable, and that's the reason we absolutely require support of the government over here. So they started talking to the government. They also started talking to the the accounting bodies as well. Just in India, they had to talk with ICAI because everyone has to be on the same page. Only then this kind of a possibility can be there where we can have a uniform set of accounting policies. So this was the idea. So International Accounting Standard Board spearheaded this entire project. And let me tell you, as of now, more than 100 countries have joined this project. More than 100 countries are now having a uniform set of accounting policies. And this is what we are trying to achieve. As more and more countries will join, we still require, India has already joined this project, but we still require China and USA also to join this project. And once that will happen, these accounting standards will become truly global, because what will really happen is we'll have an absolute uniform set of accounting policies. आप जो इंडिया में accounting standard में पढ़ोगे, वही पूरे world में applicable होगा. And there cannot be anything more better than this as far as an accountant is considered. I don't have to learn new things. I don't have to unlearn as I move from one country to another. The knowledge that I have gathered in one country is sufficient enough for me to serve in the accounting function anywhere. Not only that, the financial statements will also become comparable. फिर वो इंडिया की कंपनी का बैलेंस शीट हो कि यूएस कंपनी का बैलेंस शीट हो, कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट आई कैन रियली कंपेयर. बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही एक तरीके का होगा कि बैलेंस शीट देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज यहाँ पे ही होगी. सो वी आर ट्राइंग टू अचीव दिस पर्टिकुलर थिंग. इट विल स्टिल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. Basically, the problem will come from US only. Even International Accounting Standard Board also knows that. उन्होंने US को सबसे एंड में ही अप्रोच किया है. First, they really tried to bring all the smaller countries or countries who are really interested in this project. US, it will take a lot of time. But yes, in the next maybe 5 or 10 years, perhaps we might just be able to achieve this thing. And if this project is achieved, accounting standards are truly going to become global accounting standards. That's the reason I was saying that this is the reason that understanding of NDS is so important, because you are not learning something that will be applicable only in India. You are actually learning something which in future will be applicable in any part of the world. So that's the reason. The understanding from even an international angle also actually is very appealing. So this is basically the story behind, the NDS. Now, what ISB has suggested is, right, the International Accounting Standard Board it issues what is known as International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards. उनके दो statements आते हैं. One is International Accounting Standard, another is IFRS. Actually, before IASB, it was an International Accounting Standard Committee. उनका नाम IASC था. IASC was issuing International Accounting Standard.
then they changed their name to IASB, and once they became IASB, उनके जो भी नए statements थे, they are all known as IFRS, which is International Financial Reporting Standards. So you have IAS and IFRS. This is what are the what you can say the accounting standards or the set of accounting standards issued by IASB. अब अगर हमें accept करना है these IAS, say IAS or IFRS, then we have a choice. Either you can go for adoption or you can go for conversions. There are two choices. So what IASB has done is it has talked to the different accounting bodies, and it has also had meetings with the government, and they have offered this choice. See, we want के accounting standards all over the world same हो जाए. तो दो तरीके हैं इसको achieve करने के लिए. Either you can go for adoption or you can go for conversions. What exactly is the difference between the two, and what is what I can say the choice made by the say the Indian government? Let's try to understand in Indian context. Adoption means you adopt IAS and IFRS the way they are. उनको हमें accept कर लेना है. So कहने का मतलब the government will announce that, see, this is the date, let's say 1st April 2023, just for example, कि 1st April 2023 से every company in India has to follow IAS and IFRS. जो आपके पुराने accounting standard है उसको discontinue कर दो and start following IAS, IFRS. That is what we mean by adoption. Adoption means you dump whatever accounting that you were doing till now and you just move away to IAS and IFRS. So that is what we refer as the adoption. Getting it? So India has not gone for adoption. We have gone for conversions. Adoption is suitable for those countries which do not have their own accounting standards. जैसे Gulf countries, उनका खुद का कोई accounting standard है ही नहीं. इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? They went for adoption. They were like कि हम IAS, IFRS जैसे हैं वैसे के वैसे उसको हम accept कर रहे हैं, and we will ask our companies to start following the same. So the countries which were not having a robust accounting system, they went for adoption. India did not go for adoption. We were already having accounting standards in India. Already the Indian companies are following accounting standards since long. अब इन companies को जो accounting standards इतने सालों से follow कर रहे हैं उनको all of a sudden आप कहोगे कि ये डेट से वो बंद कर दो और ये नया शुरू कर दो, it is definitely going to be really difficult. And that is the reason we have chosen the path of convergence rather than adoption. Question is then what exactly is the difference between adoption and conversions? Conversions process में क्या होगा? In convergence process, whatever is our existing accounting standard, we will compare that accounting standard with the parallel IAS or the parallel IFRS. दोनों को हम compare करेंगे, right? So we will be comparing the two. And we will find out कि दोनों statement में differences क्या है. So we are basically going to make a comparison of our accounting standard and the parallel international accounting standard. अगर एक example लेते हैं, so हमारा accounting standard 2 है, which is inventories. वैसे ही international accounting standard 2 भी है, उसका नाम भी inventories है. So both the accounting standards are relating to inventories. So हम क्या करेंगे? हमारा accounting standard 2 और IAS 2 दोनों को compare करेंगे. And we will find out कि दोनों के बीच में differences क्या है. What are exactly the differences between accounting standard 2 and the international accounting standard 2? So we'll make a list of all those differences, right? So what I can do is I can make a list of the differences between the two statements. So let us say I compile a list and I realize the accounting standard 2 or international accounting standard 2 इनमें total 5 differences है, let's say. So there are total 5 differences between the two. So process of conversions is we will ask ourselves कि कौन-कौन से differences हम eliminate कर सकते हैं. You know, we will just ask ourselves कि okay, first difference है, can we eliminate that? Second difference, can we eliminate that? Basically our question is कि ये जो सारे differences हैं उसको अगर हम eliminate कर देते हैं और फिर जो नया accounting standard बनेगा, is it suitable in Indian context?
इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से ये एक सूटेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा. दैट इज what will be the process of conversions. So we are like okay, difference 1 2 3 4 में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो फिफ्थ है इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते. In Indian context, this difference should be there. So we will keep that particular difference. So that is what we mean by the process of conversions. तो ये जो चार differences हैं उसको हमने eliminate कर दिए. So we have eliminated this difference. In other words, accounting standard 2 has become very similar to international accounting standard 2. It is not same. See, अगर आपको same ही चाहिए था तो फिर आपको adoption के लिए ही जाना था ना. So you could have just gone for adoption. अगर आपको same ही accounting standard चाहिए then better go for adoption. लेकिन हमने select किया है conversions. क्यों conversions? Because Indian companies have been doing accounting since many years. उनको ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसा ट्रीटमेंट दे दो जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेंस ही नहीं करता है, इट विल नॉट बी प्रॉपर. एंड दैट इज द रीजन वी आर रेडी टू कीप few differences between our accounting standard and the parallel IAS or the parallel IFRS. So that is the idea of going for conversions. So ये जो difference है वो रह गया, और जो मैंने नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया आई विल कॉल दैट एज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. ये इंडियस 2 क्या है एग्जैक्टली? इट इज एब्सोल्युटली पैरेलल टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बट विथ सम डिफरेंस. जहां जहां हमने डिसएग्री किया उतने डिफरेंसेस हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में छोड़ देंगे. So that is what we refer as the process of conversions. And let me tell you, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जितने भी डिफरेंसेस हैं वो धीरे धीरे करके हम उसको भी एलिमिनेट कर देंगे. बट बेसिकली वी आर बाइंग टाइम. यू नो, कुछ ऑल ऑफ अ सडन एकदम से कुछ नया ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर इंडिया में हम इंट्रोड्यूस कर दें तो इट विल नॉट रियली मेक सेंस. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कीपिंग दैट डिफरेंस इन आवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट over a period of time, it's quite possible that we may eliminate that. And as and when we will eliminate, our accounting standard will become exactly equal to the international accounting standard. But right now we are buying time. We are just trying to understand कि ये जो नया all of a sudden जो नया system accounting का वो लोग prescribe कर रहे हैं, is it suitable in the Indian environment? And if after 5-6 years we feel कि हाँ ये suitable लग रहा है, तो हम ये difference को भी ultimately eliminate कर देंगे. But till that point of time, we are going to keep that difference in our accounting standard. So this is what we refer as the process of conversions. Every accounting standard has been compared with the parallel IAS and the parallel IFRS. और ये पूरा प्रोसेस हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए किया गया है, और जो भी फाइनल वर्जन बना, we consider that as the Indian accounting standard. So we refer that as an Indian accounting standard. Problem Indian accounting standard word का ये हो रहा था कि अगर उसके फर्स्ट अल्फाबेट्स लेके अगर शॉर्ट फॉर्म बनाए तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी शॉर्ट फॉर्म बनेगा IAS, और फिर हो जाएगा कंफ्यूजन कि ये IAS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला IAS है कि फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला IAS है. ये कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हमने उसको शॉर्ट किया एज इंड AS, सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश. कोई कहेगा कि आई हैव फॉलोड इंड AS 2 तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. अगर अदरवाइज अगर दोनों का अगर वही शॉर्ट फॉर्म रखा होता तो व्हेन आई से IAS 2, यू नो, व्हेन आई कम इन द क्लास एंड से टुडे वी विल स्टडी IAS 2, एवरीवन इज कंफ्यूज. कौन सा IAS 2 की बात हो रही है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की बात हो रही है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की बात हो रही है? वी डोंट वांट टू कंफ्यूज द रीडर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड दैट्स द रीजन वी कॉइन्ड द टर्म Indian accounting standard. So basically तो कॉपी ही किया है हमने. Now to be very honest, हमने कॉपी ही किया है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS को, लेकिन जहां जहां हमें लगा कि ये ट्रीटमेंट तो इंडिया में कुछ सेंस है ही नहीं, वहां पर वी हैव डिसएग्रीड, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सूटेबल है वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने रखी है. Getting it? For example, let us say if I give you some example,
In case of amalgamations, आप लोगों ने किया हुआ है amalgamations, maybe at BCom level or something. So what happens in case of amalgamations is we compare the purchase consideration and we compare that with the net assets taken over. So purchase consideration को net assets taken over के साथ compare करते हैं. अगर purchase consideration ज़्यादा है, then we say it is goodwill. और अगर purchase consideration कम है, तो we say it is capital reserve. तो हम उसको capital reserve में ले जाते हैं. अब ये जो international accounting standard है ना, वो लोग कहते हैं कि नहीं, अगर परचेस कंसिडरेशन कम हो तो वो कैपिटल रिजर्व नहीं है, उसको तो P&L में ले जाने का. सो यू हैव टू ट्रांसफर दैट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फिर P&L में अगर वो चला गया तो फिर वहां से तो मैं उसको डिविडेंड के, आई कैन इवन डिस्ट्रीब्यूट दैट बाय वे ऑफ डिविडेंड आल्सो. So when we were converging, right, with the international accounting standards, we were like, ये कहां से आ गया, right? इंडिया में तो हमने कभी ऐसा किया ही नहीं है. सालों से इंडिया में हमने ऐसा ही समझा है कि अगर कोई कंपनी को आप टेक ओवर कर रहे हो और उसके नेट एसेट्स जो आप टेक ओवर कर रहे हो वो मान लो 8 लाख रुपीस है और आपने उसको सिर्फ 6 लाख रुपए का ही पेमेंट किया, तो आपके 2 लाख बच गए. तो ये जो 2 लाख बच गए, हम तो सालों से इसको कैपिटल रिजर्व में ही ले जा रहे हैं. अब ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले कह रहे हैं कि नहीं, इसको तो P&L में ले जाने का. सो यू शुड टेक इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Doesn't make sense in Indian context. So India mein, it is not making any sense at all, because in India, and I personally believe that's the right thing only to do, it is at the end of the day an unrealized profit only. और unrealized profit को P&L में ले जाके और फिर उसको distribute कर दो by way of dividend is not making any sense at all, isn't it? आपने 2 लाख रुपए बचाए हैं. It is only on paper. You are not actually received 2 lakhs in cash. मैंने आपके net assets take over किए 8 lakhs के और मैंने आपको सिर्फ 6 lakhs का पेमेंट किया, मतलब 2 लाख मेरे बचे. I have saved 2 lakhs. I have not earned 2 lakhs that I credited to the profit and loss account. So इंडिया में अगर किसी को मैं समझाने जाऊंगा कि आप इसको P&L में ले जाओ ना, हमारा पूरा अकाउंटिंग का जो अंडरस्टैंडिंग है वही अफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज एट अ वेरी बेसिक एंड प्रिलिमिनरी लेवल that we will never consider this to be an item of income which I can transfer to the P&L. So जब हमने कन्वर्ज किया तो हमने क्या कर दिया, इस पैराग्राफ में क्लियर कर दिया कि ये P&L में नहीं जाएगा, ये तो सालों से कैपिटल रिजर्व में जाता है, कैपिटल रिजर्व में ही जाएगा, भले ही आप इंड एएस फॉलो कर रहे हो, but it will be going to the capital reserve only. So that is the benefit of going for conversions. कि जहां जहां भी हम डिसएग्री करें विद द इंटरनेशनल प्रैक्टिस, वी कैन इंडियनाइज इट. वी कैन से कि नहीं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दिस विल नॉट मेक सेंस, एंड दैट्स द रीजन वी विल कीप दिस पर्टिकुलर डिफरेंस. ये जो डिफरेंस रह जाएगा, we refer this difference as a carve out. This is a term that you should really remember. Carve out. What's a carve out? Any difference between the Indian accounting standard and its parallel international accounting standard or its parallel IFRS. Usko hum kahenge carve out. So whenever we are learning any carve out or you are reading anything about Ind AS and you come across this term carve out, then understand the meaning of carve out. You are suggesting that this is a place where our Indian accounting standard has deviated from the international practice. So IAS से अगर कुछ अलग बात हमने की है, IFRS से अगर कोई अलग बात की है, we will refer that as a carve out. कहने का मतलब, if you know Ind AS, let's say, if you know Ind AS and you know what are the carve outs, basically you know what is IAS and IFRS. Can I say it so? Yes. थोड़ा mathematical equation बन गया, but what do you really say? If you really know Ind AS, अगर आपको Ind AS अच्छे से पता है और सारे carve outs भी आपको पता है, तो actually आपको क्या पता है? You know the the international accounting standard and the IFRS. That is what you actually know. So हमें अलग से IFRS या IAS सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है. We have to simply learn our Indian accounting standards along with the carve outs, and we are good to go. We very well know the international accounting standards. We very well know even the IFRS. So that's the kind of, what I can say,
knowledge building that really takes place once we are thorough with the Indias and the carve-outs. And then if you really want something which is truly acceptable worldwide, you can do what is popularly offered as a diploma course in IFRS, or maybe even a certificate course. Diploma to fir bhi thoda difficult hai, but you can go for a certificate course on IFRS. And it really opens up a lot of global opportunities, actually, right? The way we study in India, the Western world doesn't really study. So अगर आपने इंडियस और IFRS दोनों का अंडरस्टैंडिंग लेकर अगर IFRS में कोई डिप्लोमा या इवन अ सर्टिफिकेट कोर्स भी किया हुआ है, it opens up opportunities worldwide, actually. As such, Indians, chartered accountants and CMAs are already demanded, especially in the Gulf countries, so tremendous demand already hai. Well, उसमें अगर आप ये certificate course भी IFRS का जोड़ देते हो, then it further improves, your CV like anything. This is provided, of course, if accounting is, something that you are really interested in. So definitely that caveat is always there. It's quite possible that accounts is maybe your least favorite subject. So फिर वो अलग बात है. Again, accounts is something that you are really interested in. या उसमें ही अगर आपको career बनाना है, then this is a golden opportunity. Very few people actually know about this, and very few people actually do this. But it is, what I can say, tremendous, right? Along with our degree, जो हमारा जो traditional degree है, CA हो या CMA हो, उसके साथ this diploma certificate, it gels up like anything, because it's very much related to the field that we actually study in. But that is there, as I said, basic interest has to be there in accounts, right? I'm not too sure about that. So exactly speaking, CMA students are, it is still something new for me. So let me ask you guys, which is normally the subject that you are more interested in? Agar aap CMA kar rahe ho, so which is the subject that interests you guys more? Yeah, aisa kuch hai nahi. Any specific subject? Law. Huh? Law. Law, okay. Is that really connected with CMA? Yeah, Okay. no, it's not that much inclined towards the costing area, but I find it interesting. That's great. Finance management. Okay. Taxation. एक एक करके सारे सब्जेक्ट के नाम आने लगते हैं. I really get that feeling. Someone will say indirect tax रहेगा. Someone will say GST. Operations management. बहुत easy होता है वो. इसलिए वो मेरा favorite है. Accounts किसी का भी नहीं है. Is it so? Accounts का रहता है ना, ये 11th standard से इतना पीछे पड़ा है this accounts. We really simply don't understand कि ये कब खत्म होने वाला है, right? So that is the whole thing which is there, isn't it? 11th के पहले तो we were not knowing anything about accounts. वो मैंने वो ऐसे वाला आपको पूछा, did anyone write CMA? कॉमर्स के बारे में कुछ पता नहीं है तो क्या लिखने वाले हो? So we were not even knowing anything about commerce at that time. Am I right? Or were things different when you guys were growing up? कि एकदम कॉमर्स का full knowledge लेकर बैठे हुए थे. 7th standard 8th standard से पता है कॉमर्स में क्या होता है, क्या क्या फील्ड्स होते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है, और फिर एकदम इन्फॉर्म डिसीजन लिया आपने कि फिर साइंस रिजेक्ट करके कॉमर्स लिया है, कि कॉमर्स को सिलेक्ट करके कॉमर्स लिया है. How many of you selected commerce and rejected? कि फिर मैथ्स तो मुझे समझ में नहीं आएगा, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, तो करना क्या है, कॉमर्स कर लेते हैं, राइट? एंड देन वी जॉइन फॉर कॉमर्स. और फिर 12th में आके अब क्या करेंगे, सीए करेंगे, सीएस करेंगे, सीए करेंगे. सीए में बहुत टाइम लगता है, सीए में 2.5 साल में हो जाएगा, चलो सीए में कर लेते हैं. मतलब सारे कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, रिजेक्ट करने के बाद जो बच गया वो हमने कर लिया. इज इट लाइक दैट कि किसी ने सिलेक्ट करके किया है? एनीवन? Commerce? How many of you selected commerce?
That's great. How come? The science was interesting. मतलब साइंस रिजेक्ट नहीं हुआ है. पहले से ही टाइम से ही मिला rejected. ओके, वही हुआ ना, मतलब जो हम कह रहे हैं वही हो रहा है. साइंस रिजेक्ट होके ही कॉमर्स आया. साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं था. क्यों है, साइंस में भी इतना ही इंटरेस्ट था, कॉमर्स में भी इतना इंटरेस्ट था, और सब एनालिसिस करने के बाद आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट आई शुड बी डूइंग कॉमर्स. एनीवन? हाँ, that is the thing. That's what I'm trying to say, that it is, what we can say, the irony, right? We were not knowing anything about it, and I personally believe it's really very wrong. Many a times I interact with so many of my other friends who actually are from science background. Accounts ka A bhi nahi aata unko, not even A. We know more of science than they know more about commerce, to be very honest. When we sit down and if they are talking about something, so we can share so much of our understanding of science ki aise hota hai, ye universe aisa hota hai. We have far more better knowledge. और लेकिन उनको पूछोगे कि depreciation कैसे चार्ज होता है, they are just looking at, अरे भाई पूरी दुनिया कैसे घूमती है वो सब पता है, लेकिन depreciation कैसे चार्ज होता है, they don't have any idea about it. So that is how they are really going to be, isn't it? So that's the thing which happens. I just told one of the guys over there कि ये जो तुम्हारा जो पासबुक है ना, जो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, वो हम हमारी अकाउंटिंग बुक्स में डेबिट बैलेंस दिखाते हैं. एंड दैट गाय वाज रियली लुकिंग एट मी कि पासबुक में जो क्रेडिट है वो तुम्हारी बुक्स में डेबिट कैसे हो गया? हाँ, डेबिट होता है. हमारे बुक्स में बैलेंस शीट में जो कैश होता है ना, वो डेबिट होता है. एंड दैट गाय वाज जस्ट नॉट रेडी टू बिलीव ओनली कि वो डेबिट कैसे हो सकता है, कि ये तो मेरी क्रेडिट है. दैट वो अलग है. भले पासबुक वाले क्रेडिट देते हो, हमारी अकाउंट्स की बुक्स में तो वो डेबिट आएगा. तो कभी आना, हम समझाएंगे आपको कि वो कैसे डेबिट हो जाता है और कैसे क्रेडिट. इतना सिंपल थिंग, दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड, एंड देन दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ स्टार्स आर फॉर्म्ड एंड ऑल. सो दिस इज the entire case, right? So definitely we know far more about science than what they know about commerce, but that was only after we joined commerce. Before that to hawa mein tukka hi lagaya tha. That is how it has been. So we are just waiting to understand what exactly is the case, and then our journey for accounts started, and it's still not ending, isn't it? So we still have something left. And we have this subject, corporate financial reporting, where we are still studying about accounts, and we keep on wondering abhi bhi aur kya reh gaya. So that's what we are seeing, kya reh gaya hai, right? So we are just looking into the accounting standards. Basically ekdam settle ho gaya tha, accounts was, to be very honest, absolutely settled till the introduction of the Indians. Otherwise accounts was absolutely settled in India. कि अब इतना ही है, इससे ज्यादा अब और कुछ आने नहीं वाला है. और जब ही ऐसा लगा, we just came up with this new concept of the Indian accounting standards. Again, afresh, we are trying to understand what this new system of accounting actually is. So as I was saying, the basic purpose of introducing an Indian accounting standard is that India, being such a major force of the world now, we cannot remain isolated. It's absolutely necessary that even Indian companies also embrace the globally accepted practices. हाँ, जहां थोड़ा बहुत difference है, हमने उसको carve out के तौर से रखा हुआ है. Otherwise, more or less, we are following the international practices. Actually, when the first time Indian government announced that we will go for conversions, a lot of experts were what we can say, of the opinion कि ये इंडिया ने गलत कर लिया, कि we should not go for conversions, because the experts feared कि हम बहुत सारे differences रखेंगे, that we will keep so many differences that hardly it will matter कि हम accounting standard follow कर रहे हैं या INDS. But to the credit of ICAI and the credit of the industry and also the credit of the government, that there are very few carve-outs. बहुत ही कम carve-outs है. And with very few carve-outs, we have come up with the accounting standards. So it's a big credit
not just for the accounting setting borders, but even for the industry also, because ultimately तो उनको ही follow करना था, right? An accounting body will तो accounting standard design करके आपको दे देंगे, लेकिन ultimately तो आपको ही as a company आपको follow करना है. So Indian companies, whether they were prepared for it or not, that was definitely the case. But the industry also rose to the entire occasion. Now, when it comes to the Ind AS, we are following two number systems. कुछ Ind AS and Ind AS 1, 2, 7 onwards होंगे, और कुछ Ind AS 101, 102 onwards होंगे. अभी the latest Ind AS, it is Ind AS 116, which is the last Ind AS which has been introduced. और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसा नहीं है. It is 1, 2. Originally 3, 4, 5 सब थे, but there are many international accounting standards which have been withdrawn, they have been superseded. तो फिर जो number system अभी है, it is like 1, 2, फिर बीच वाले हैं ही नहीं, फिर directly 7 आता है, फिर 8 आता है, फिर 9 नहीं है, फिर 10 है, फिर 11 नहीं है, फिर 12 है, and so on. So that is the number system that we have. So many a times we will be studying maybe Ind AS 2. Sometimes we will be studying Ind AS 102. तो ये दोनों में difference क्या है? Why are we having two number systems? क्यों है दो number systems? That same reason. International Accounting Standard Board ने क्या क्या issue किया है? International Accounting Standard has issued IAS as well as IFRS. अब हमको दोनों के साथ conversions करना पड़ेगा ना. We have to converge with IAS also and we have to converge with IFRS also. अब उन्होंने तो दो अलग term use किया. So they can have IAS 1 and they can also have IFRS 1. They can have IAS 2. They can also have IFRS 2. क्योंकि आगे they are writing IAS or IFRS. लेकिन हमें तो डिजाइन करना है common accounting standard which is the Ind AS. So any Ind AS which is converged with IAS, उसका number system रहेगा 1, 2 and so on. And any Ind AS which is converged with IFRS, उसका number system रहेगा 101, 102, 103 and so on. So अगर मान लो हम Ind AS 109 पढ़ रहे हैं, let's say if I tell, let's say we are starting with Ind AS 109, तो उसका क्या मतलब रहेगा Ind AS 109? It is an Indian accounting standard which is converged with IFRS 9. लेकिन मैं जैसे ही कहूंगा कि आज हम Ind AS 32 पढ़ेंगे, then Ind AS 32 means it's an Indian accounting standard which is converged with IAS 32. So 1, 2, 3 वाला जो number system है वो हमने IAS के लिए रखा है, और 101, 102, 103 onwards वो number system हमने IFRS के लिए रखा है. क्योंकि जब हम conversions करेंगे, we have to converge with both IAS as well as the IFRS. So that's the reason you will see these two number systems which is going on. Ind AS 116 does not mean ke 116 accounting standards. You know, someone will be like, if I come and say Ind AS 116, half of the class will be out. Ke kya hai? 116 accounting standards padna hai. What exactly are we supposed to study? ऐसा नहीं है, वो 16 accounting standard तक ही पहुंचे, right? So we are saying 101, 102, 103 and so on. So we have reached only till 116. और Ind AS को जब 1, 2, 3 वाला जो फॉर्मेट है वहां पे हम 41 तक पहुंचे, लेकिन बीच में there are lot many which have actually been withdrawn. So बीच में withdraw हो गए. International Accounting Standard Board, whenever it comes to the conclusion कि ये International Accounting Standard अब outdated हो गया है, they withdraw it and they replace it with an IFRS. So IFRS keeps on increasing and they will keep on increasing over a period of time, and gradually the international accounting standards will be withdrawn and they will keep on replacing it with a fresh accounting standard. जो नए accounting standards बन रहे हैं उनको वो IFRS कह रहे हैं, जो पुराने वाले थे उसको हम international accounting standard कह रहे हैं. Actually, worldwide, everyone has understood one thing, that accounting standards का main objective है to bring about proper financial reporting. That is the main intention of the accounting standard. Accounting standard actual accounts को बहुत कम affect करता है. What we want is
proper disclosures in the financial statements. क्योंकि किसी कंपनी का अगर मुझे बैलेंस शीट मिलेगा, लेट्स से अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुझे बैलेंस शीट मिलता है एंड आई एम लुकिंग एट द एनुअल रिपोर्ट, तो वो बैलेंस शीट देख के मुझे कैसे पता चलेगा कि उन्होंने कौन सी अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड की? वो मुझे लेजर थोड़ी ना दे रहे, दैट आई विल कम टू नो व्हाट इज देयर अकाउंटिंग एंट्रीज. सो एनुअल रिपोर्ट देख के वी नेवर कम टू नो हाउ द अकाउंटिंग वाज डन. इसलिए वो अकाउंटिंग कैसे हुआ है वो समझने के लिए मुझे चाहिए डिस्क्लोजर्स. क्या आप एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स दो तो वो डिस्क्लोजर पढ़ के मुझे पता चलेगा कि ओके ये आइटम का इस तरीके से अकाउंटिंग हुआ है. That's the reason all the new accounting standards, they also concentrate a lot on disclosures. They provide a large number of disclosures because only with disclosures we can understand accounting, or rather I'll say the financial statements in a better manner. So Ind AS aane ke baad, the sizes of the annual reports have increased like anything because they are demanding a lot of disclosures. So जो disclosures जो पहले वो लोग दे रहे थे as per accounting standards, उसके हिसाब से अब काफी ज्यादा disclosures देने पड़ते हैं because we require a proper disclosure system so that I can read the disclosure and then I can understand that this is how the accounting was carried out. क्योंकि accounting interest तो कोई share नहीं करने वाला, तो वो description देख के ही मुझे पता चलेगा कि उसका accounting सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है. और वो अकाउंटिंग समझने के लिए जो जो भी आइटम्स चाहिए, all those items will be demanded by the Ind AS insofar as disclosures are considered. So that is what we can say, the reason that why they changed the name from IAS to IFRS, where they now call it as International Financial Reporting Standard. हमारा भी सब्जेक्ट का नेम चेंज हो जाता है, right? So earlier it was like accounts, then they say advanced accounts. This is how they really do. But now at final level, अब advanced का भी अब कितना advanced करेंगे, क्या exactly करेंगे? So we are now saying it is corporate financial reporting. So we, even at final level, we change the name of the subject itself. We no longer say this is accounts. When I am coming into the class, we hardly doing any accounts. We are more into financial reporting. कि अगर ये transaction हुआ है तो उसका reporting हमें कैसे करना है. So that is what is the subject matter now. That how the P&L will be prepared, how the balance sheet will be prepared, so that people can understand the main idea behind the transaction that you have carried out. And that's the reason we also call our subject no longer accounts, or advanced accounts, or accounting, or something like that. We also say it is financial reporting. Since your financial reporting is strictly from company viewpoint, they have named the entire subject as corporate financial reporting. And Ind AS is going to play an important role in how the corporate reporting is needed to be carried out. Now that we have a real good background about the Ind AS, question is, who exactly is supposed to follow the Ind AS? ये Ind AS follow किसको करना है? One of the biggest myth which is there is that all the companies have to follow Ind AS, which is absolutely wrong. सारी companies को Ind AS follow नहीं करना है. Only selected companies have to follow the Ind AS. So बाकी सारी companies क्या follow करेगी? If they are not following the Ind AS, they will follow the other set of accounting standards. Accounting standards तो already है ही ना, तो वो सारी companies वो accounting standards follow करेंगे, और बाकी सारी companies जो हमें road map में देखेंगे, all those companies will follow the Indian accounting standard. So please be clear with this first myth which is there with respect to the Ind AS, that every company has to follow Ind AS. कि अभी तक हमने जो accounting standards पढ़े वो तो सारा knowledge हमारा useless हो गया. You know, this really happens. कि BS Ind AS आ गया, पुराने accounting standard का क्या करें? पुराने accounting standards are also absolutely applicable. Actually, more than 90% of the companies तो वो पुराने accounting standards ही follow करेंगे. It is the large companies, the companies which really matter, they are the ones they will follow the Ind AS. Because the reason is that the Ind AS is so complicated compared to the regular accounting standard कि small companies को कहेंगे कि आप ये accounting standard मतलब Ind AS follow करो, they will not be able to do it so. क्योंकि काफी सारी small companies इंडिया में तो ऐसी है कि उनका कोई regular accountant भी नहीं होता.
दे डोंट इवन हैव अ रेगुलर अकाउंटेंट. उनका अकाउंटेंट कैसे होगा? वीक में एक दिन आएगा और कहेगा हाँ सारे वाउचर्स ले लेगा, सारी अकाउंटिंग एंट्री कर देगा और चला जाएगा. दिस इज हाउ इट विल बी. जब हम ऑडिट करने जाएंगे ना, व्हेन वी गो फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो वो अकाउंटेंट को स्पेशल बुलाना पड़ता है. कौन है आपका अकाउंटेंट, बुलाओ उसको. सो दैट इज हाउ द अकाउंटिंग इज डन. So many times the accounting itself will be outsourced to the firm itself. जो ऑडिट कर रहा है वही अकाउंट्स पे लिख रहा है. एक्चुअली ऐसा होना ही नहीं चाहिए, बट दिस इज व्हाट हैपेंस विद सो मेनी. मैं खुद ही अकाउंट्स बनाऊंगा, फिर मैं खुद ही चेक करूंगा कि मैंने सब बराबर किया, और फिर मैं रिपोर्ट भी दूंगा और साइन भी करूंगा. ये सब बराबर ही है. दिस इज नॉट हाउ ऑडिट शुड रियली बी डन, बट these are what you can say some harsh realities which are there. कि एकदम छोटी सी कंपनी है, तो दे आर लाइक अब अकाउंटेंट हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते. सो दे आर लाइक कि भाई आप ही अकाउंट्स बनाओ, आप ही ऑडिट करो, आप ही हमें रिपोर्ट दो. वी हैव फुल ट्रस्ट इन यू. सो दिस इज हाउ थिंग्स आर एक्चुअली हैपनिंग. अब ऐसी कंपनी को आप कहोगे कि आप इंडिया फॉलो करो, not possible. It is simply not possible. And that's the reason there are certain selected companies which are supposed to follow the Ind AS. So let's understand which are the companies that will follow the Ind AS. And let me tell you, ये सारी dates already जा चुकी है. In a way, we are discussing a little bit of history over here. क्योंकि जितनी भी dates है, सबकी सब dates अब they have already passed by. But this will give you a fair idea that as on today, as on today, which are the companies which are following the Ind AS. We'll get a fair idea about the same. It all started with 1st April 2015, where the Indian government says that companies will follow, but they said it will follow on voluntary basis. उन्होंने voluntary रखा था कि 1st April 2015 on voluntary basis, अगर किसी भी कंपनी को मन होता है कि मुझे Ind AS follow करना है, तो आप voluntarily Ind AS follow कर सकते हो. Not a single company adopted the Ind AS. Not a single. India में कुछ भी voluntary नहीं होता है, right? We have to make it compulsory. तभी इंडिया में लोग करने के लिए तैयार है, right? So that is how it will be. जैसे GST का केस हुआ था, right? The way GST was introduced in India, it was not a proper system, to be very honest. I'm talking about when it was introduced in India. लेकिन ले आए. The Modi government was very clear कि लेकर आओ, धीरे धीरे उसको चेंज करेंगे. This is how it is. I'll tell you, जो GST इंट्रोड्यूस हुआ था और आज जो GST है, उसका कोई भी संबंध नहीं है. काल्पनिक भी नहीं है. दैट फिक्शनल, वो मूवीज में आता है ना स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर, ऐसा भी कोई दोनों के बीच में कनेक्शन ही नहीं है. वो इतना चेंज हो गया है क्या पता ही नहीं है कि ये इंट्रोड्यूस हुआ था क्या. So that is how the GST has changed over a course of time. But till we really design a system which is really foolproof and then we introduce, this was something which was felt that this will not make any sense at all. इसलिए जो है जैसा है उसको ले आओ, फिर धीरे धीरे उसकी मरम्मत करेंगे, right? So that was how the entire system was. So it became compulsory, so everyone started following. आपको क्या लगता है अगर GST वॉलंटरी बेसिस पे लाते कि हम कंपनी सोएंगे, या तो आप वेट फॉलो करो या तो GST वॉलंटरी, आपकी चॉइस. आपको लगता है कोई GST करेगा? नो वन. उनका तो चॉइस रहेगा कि दोनों में से कुछ भी नहीं करना. That is what their actually ideal choice will be. But any case, what really happens is that till we don't make it compulsory, no one is ready to do anything. So that is what happened from 1st April 2016, where we brought it from on a mandatory basis. We made it compulsory कि ये companies को तो compulsorily Ind AS follow करना पड़ेगा. कौन है ये companies? Companies whose equity shares or debt securities are listed on stock exchange in or outside India, having a net worth of rupees 500 crores or more. See, in Indian context, 500 crores is a huge sum of money. So we are saying कि ऐसी कोई भी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 crores या ज्यादा हो, जिसके शेयर्स या डेट सिक्योरिटीज इंडिया में लिस्टेड हो या इंडिया के बाहर लिस्टेड हो, इन सारी कंपनीज को Ind AS फॉलो करना होगा. Basically those companies who can afford a good accountant, basically that was the case कि एक अच्छा accountant जो afford कर सकती है, which can also afford a proper auditor, उन companies को कहो कि Ind AS follow करो. फिर
Unlisted companies having net worth of 500 crores or more. Unlisted companies will include the private limited companies. ऐसी कोई भी private limited company जिसका net worth 500 crores या ज्यादा है, आपको भी फॉलो करना है इंडियस। फिर आप आर्ग्यू नहीं कर सकते कि मैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूं तो आई विल फॉलो द रेगुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो लेकिन नेटवर्थ आपका कुछ हद से ही ज्यादा है, राइट? 500 crores or more, that's a huge sum of money. And the other one is finally holding subsidiary, joint venture or associate companies of above listed or unlisted company. अगर कोई कंपनी है जो इंडियस फॉलो कर रही है तो उसकी सब्सिडरी को भी इंडियस फॉलो करना है, उसके एसोसिएट को भी इंडियस फॉलो करना है, उसके जॉइंट वेंचर को भी इंडियस फॉलो करना है। सी दिस इज नेसेसरी, अदरवाइज ग्रुप में ही अलग अलग कंपनीज अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे, देन इट्स गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट कि सब्सिडरी कह रहे हैं कि नहीं मुझे कहाँ इंडियस फॉलो करना है, मैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करूंगा, एंड पेरेंट इज लाइक दैट आई हैव टू फॉलो द इंडियस। So two companies of the same group, they are following two different sets of accounting standards. Does not make any sense at all. So that's the reason we have asked all those companies to follow the IND-PS, right? And finally, again, phase 2, which was implemented from 1st April 2017. Yahan pe they are saying that companies whose equity shares or debt securities are listed on stock exchanges in or outside India and having a net worth of लेस देन रुपीज 500 crores, क्योंकि पहले हमने 500 crores या उससे ज्यादा रखा था, अब हमने कह दिया लेस देन रुपीज 500 crores। जस्ट सी किस तरीके से उन्होंने लिखा है ये। द फर्स्ट आइटम, एज ऑन टुडे एवरी लिस्टेड कंपनी हैज टू फॉलो इंडियस। अब उनका नेटवर्क का कोई क्राइटेरिया नहीं है। पहले था कि 500 crores या उससे ज्यादा, अब उन्होंने कह दिया less than 500 crores. आपका नेटवर्थ नेगेटिव भी हो सकता है। It's quite possible that you might be a loss-making company or net worth is negative. Still, if you are a listed company, you have to follow the IND-AS. आपको IND-AS follow करना होगा। So basically, we are trying to understand कि as on today, आज की तारीख में कौन सी कंपनी IND-AS follow करेगी? सारी की सारी listed companies IND-AS follow करेगी। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आप इंडियस अभी फॉलो नहीं कर रहे, बट यू कम अप विथ एन आईपीओ एंड देन यू गेट योरसेल्फ लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, यू हैव टू अगेन स्टार्ट फॉलोइंग द इंडियस, क्योंकि आप अब लिस्टेड कंपनी हो गए, सो यू हैव टू नाउ फॉलो इंडियस। योर नेटवर्थ डज नॉट मैटर इफ यू आर अ लिस्टेड कंपनी। एंड व्हेन यू से लिस्टेड, we are not saying listing only of equity shares, it can even be listing of debt security. Again, we are not saying listing only in India, it can even be outside India. आपको फॉलो करना होगा इंडियस, राइट? ऐसा पॉसिबल है कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आपने कुछ डिबेंचर्स इश्यू किए हैं एंड योर डिबेंचर्स आर लिस्टेड आउटसाइड इंडिया, यू विल फॉल इन दैट फर्स्ट कैटेगरी एंड यू विल हैव टू फॉलो द इंडियस। अगर आपका लिस्टिंग हुआ है इंडिया के बाहर, आपको इंडियस फॉलो करना है। There are many private limited companies in India which have gone for listing of their equity shares also. If you have gone for a listing of the listing of debt securities, if you have gone for a listing of debt securities, whether in India or outside India, you still have to follow the IND-AS. What about the unlisted companies? Unlisted companies having net worth of 250 crores or more, but less than 500 crores. 500 crores को तो पहले ही हमने कवर कर लिया था। So now we are saying 250 crores. So private limited companies के लिए हमने threshold रखा है 250 crores. So अगर कोई private limited company है जिसका नेटवर्थ 250 crores से कम है, उसको IND-AS follow नहीं करना है। And finally, holding subsidiary, joint venture or associate companies of above listed or unlisted companies. याद रखना, आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आपका नेटवर्थ सिर्फ 10 crores है, यू आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, योर नेटवर्थ इज ओनली 10 crores, सो यू आर आर्ग्यूइंग कि मुझे IND-AS फॉलो नहीं करना। लेकिन आप एक लिस्टेड कंपनी की सब्सिडियरी हो, अब आपका नेटवर्थ क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा, अब आप वो थर्ड कैटेगरी में कवर हो गए, यू स्टिल हैव टू फॉलो द IND-AS। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। You are a private limited company, your net worth is less than 250 crores, so you are looking at category B। कैसे B में लिखा है ना कि मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूं, मेरा नेटवर्थ तो 250 crores से कम है, तो मुझे तो IND-AS कहां फॉलो करना है।
लेकिन आप एक लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी हो या लिस्टेड कंपनी के एसोसिएट हो या लिस्टेड कंपनी का आप जॉइंट वेंचर हो या तो किसी लिस्टेड कंपनी की आप पेरेंट कंपनी हो, you have to now follow the Ind AS. For example, if I take Indian context, India, we have this company Tata Sons, right? Now Tata Sons is actually a closely held company, और Tata Group की जितनी भी companies हैं, they are all its subsidiaries. You talk about any Tata Group company, you say Tata Motors, या Tata Steel, या Tata Tea, Tata Consultancy Services. These are all huge companies. Actually, they are big companies of India and they are all listed companies. और ये सारी listed companies का parent holding company कौन सा है? Tata Sons. Tata Sons unlisted है. Question is, Tata Sons unlisted. What should it follow? Ind AS? Or will it follow the regular accounting standard? आपकी जितनी भी सब्सिडीज हैं, ये सब्सिडीज क्या है? लिस्टेड है. आपकी सब्सिडी क्या फॉलो करेगी? Ind AS. तो आपको भी क्या फॉलो करना है? Ind AS. क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया है होल्डिंग कंपनी ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, इवन द होल्डिंग कंपनी. सो अगर कोई कंपनी है जो Ind AS फॉलो कर रही है and you are in that group associated either as a holding or a parent company or a subsidiary or an associate or a joint venture, सबको फॉलो करना है Ind AS. वहां उस टाइम पे नेटवर्थ का कोई क्राइटेरिया नहीं है. लेकिन आप एक स्टैंड अलोन कंपनी हो, राइट? स्टैंड अलोन कंपनी. मुझे कोई बिजनेस करना है तो मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फ्लोट की रखी है. मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई लिस्टेड कंपनी की सब्सिडी ऐसा कुछ नहीं. इट्स अ स्टैंड अलोन एंटिटी, इट्स अ स्मॉल कंपनी. देन आई एम नॉट सपोज्ड टू फॉलो द Ind AS unless and until I decide to do it so on voluntary basis. वो तो हमेशा है ही. ये वॉलंटरी चॉइस तो दिया ही है. अगर आपको वॉलंटरली फॉलो करना है तो आप हमेशा Ind AS फॉलो कर सकते हो. लेकिन अगर वॉलंटरी आपको नहीं करना है तो फिर मैंडेटरी क्राइटेरिया में जाओगे. मैंडेटरी क्राइटेरिया अगर एप्लीकेबल है तो Ind AS फॉलो करो, अदरवाइज यू विल नॉट फॉलो द Ind AS. Comfortable? So as on today, which companies are following Ind AS? All companies are not following Ind AS. Which companies are following Ind AS as on today? All listed companies are following Ind AS. Second, all private limited companies, मतलब unlisted companies are following Ind AS, जिसका नेटवर्थ है 250 crores या उससे ज्यादा. And third, कोई भी कंपनी जो Ind AS फॉलो कर रही है, अगर आप उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो या सब्सिडरी हो या एसोसिएट हो या जॉइंट वेंचर हो, आपको फॉलो करना है Ind AS. बाकी सारी कंपनीज दे आर गोइंग टू फॉलो the other set of accounting standard. जो AS हम पढ़ते थे ना, AS1, AS2, AS3, AS4, AS5, उनको वही फॉलो करना है. पार्टनरशिप फर्म्स, उनको वही फॉलो करना है. ट्रस्ट, उनको वही फॉलो करना है. Because this is a roadmap for corporates. It is not a roadmap for partnership firms or a roadmap for proprietary concerns. अगर मुझे अकाउंटिंग करना है तो I will follow the accounting standards unless voluntary I follow Ind AS, तो वो अलग बात है. Otherwise I have to follow the regular accounting standard. So दोनों इंडिया में चलने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी चलेंगे और Ind AS भी चलेंगे. लेकिन जो लार्ज कंपनीज है, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज को उन्होंने कवर कर दिया, जो लार्ज कंपनीज है they have to follow the Ind AS. And one real critical, what you can say, consultancy job a lot of people who practice in this area get is when any company has to switch over from an accounting standard set to another set of accounting standards, wo itself is, a big process. जो consultancy में उनके लिए this is one major consultancy assignment. जैसे कि मेरा private limited company है and all these years I have been following the accounting standards. लेकिन अब मुझे switch over कर देना है to the Ind AS. So now I need someone who will guide me कि ये जो accounting standard के हिसाब से अभी तक जो accounting किया तो उसको मैं transit कैसे करूं to the Ind AS. उसके लिए एक separate accounting standard भी बनाया है which is Ind AS 101 which talks about first time adoption of Ind AS. ये सारी companies जो as on today, क्योंकि ये तो 1 April 2017 था ना, ये सारी कंपनीज 1 अप्रैल 2017 से Ind AS पे ट्रांजिट हो चुकी है. लेकिन जब उन्होंने ट्रांजिट किया
उस टाइम पे भी तो गाइडेंस चाहिए कि ट्रांजेक्शन कैसे करना है, तो उसके लिए था एक पूरा अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हिच इज इंडियाज 101, which explained that how you have to move from the regular accounting standard to the Indian accounting standard, because that itself is going to be a big job. And do understand, India's 101 का काम खत्म नहीं हो गया. It's not like अब 1 April 2017 चली गई तो अब 101 का कोई काम नहीं. नहीं, एवरी ईयर नई नई कंपनीज आती ही रहेंगी जिसको इंडियाज फर्स्ट टाइम अडॉप्ट करना पड़ेगा. As I said, any unlisted company जिसको लिस्टिंग करवाना है, या आप अनलिस्टेड कंपनी हो लेकिन किसी लिस्टेड कंपनी की सब्सिडी या एसोसिएट ऐसे कुछ बन गए, you will have to switch over to the Indias. But at that time, you will have to basically implement the Indias for the first time. And every time when you implement it for the first time, you have to go through the procedures given in Indias 101. Right? Yes, a companies or securities are listed or are in the process of listing on the small and medium exchange need not apply the Indias unless it voluntarily decides to. So there are certain platforms where what you can say, even small and medium sector enterprises are allowed to list their shares. अगर ऐसा listing आपका है तो फिर आपको Indias follow नहीं करना है. We are basically talking about listing on some major stock exchange. कि आपने Bombay Stock Exchange या National Stock Exchange या any other prominent stock exchange पे अगर आपने listing करवाया है, then you have to follow the Indias. If you have listed as a small and medium size enterprise, then in that event, unless and until you voluntarily decide to, you do not have to follow the Indias. Another important thing about the Indias is you can never discontinue it. You know, this is something that you have to really remember. This is yet another myth which is there in the market कि कोई बात नहीं, listed company है तो Indias follow करना पड़ेगा, चलो unlisted हो जाते. There are so many companies which on Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, they go for getting delisted. वो लोग delist हो जाते. So this is, you know, at the back of your mind कि Indias आ गया है applicable, delist हो जाते. या तो फिर आप कोई private limited company और आपका net worth आ गया 255 crores. Like, yeah, 250 crores का threshold था. 5 crores से, you know, Indias applicable हो गया. So किसी ने आपको समझाया कि एक buyback लेकर आओ. Next year buyback कर लो. And go for a buyback of equity shares और net worth को 250 से नीचे ले आओ and discontinue the Indias. कुछ भी काम नहीं करेगा. Once you follow Indias, you have to keep on following the Indias. You simply cannot roll back Indias. Indias का कोई roll back possible ही नहीं है. एक बार जो implement आपने कर लिया, you have to now keep on applying the Indias. Unless and until आप liquidate हो जाओ तो वो अलग बात है, that you are so fed up of Indias कि you are like कि आप liquidate ही हो जाओ. तो आप कंपनी को लिक्विडेट कर दो तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेने वाला जस्ट बिकॉज आपको इंडियस पसंद नहीं है. सो व्हाट विल हैपन इज यू आर गोइंग टू रिमेन स्टक विद द इंडियस. थिंक ऑफ अ सिचुएशन समथिंग लाइक दिस. अगर आप लार्ज कंपनी और इंडियस फॉलो कर रहे हो तो ठीक है. लेट अस से देयर इज सम कंपनी ए प्राइवेट लिमिटेड. ओके, इसका नेटवर्थ है 1 करोड़. एक छोटी सी कंपनी, राइट, इट हैज अ नेटवर्थ ऑफ 1 करोड़. और फिर ऑल ऑफ अ सडन एक कंपनी आई बी लिमिटेड, उसने उसका 80% शेयर्स खरीद लिया ए प्राइवेट लिमिटेड का. सो ए प्राइवेट लिमिटेड बिकेम सब्सिडियरी. सो इट हैज बिकम अ सब्सिडियरी ऑफ बी लिमिटेड. अब ये जो बी लिमिटेड है ना, वो लिस्टेड कंपनी है, इसलिए वो इंडियस फॉलो कर रही है. तो वो कह रहे हैं कैसे अब तुम है ना लिस्टेड कंपनी के सब्सिडी हो गए, सो तुम भी फॉलो करो इंडियस, isn't it? Because if you are a subsidiary of a listed company, then you have to also follow the Indias. So A Private Limited started following the Indias. 2 साल के बाद B Limited is like, we are no longer interested. We sell all 80%. So सारे 80% shares sell करके वो लोग निकल गए. और ये A Private Limited again became a standalone company. Let us say ये 2 साल के बाद उसका नेटवर्थ हो गया है 2 crores. So this company is like that now I don't want to follow the Indias anymore.
Possible? Not possible, right? So even though B Limited has exited the company, it has given you, a return gift. Ind AS छोड़कर वो लोग जाएंगे. So पहले उन्होंने आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लिस्टेड कंपनी सब्सिडरी बना दिया, अपनी इंड AS इम्प्लीमेंट कर दिया अपनी कंपनी में, और फिर 2 या 3 साल के बाद उनका मन उठ गया, दे आर लाइक नहीं, कुछ मजा नहीं आ रहा, हम तो शेयर सेल कर रहे हैं, एंड दे एग्जिटेड. आप तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पहले भी थे, अभी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो. नाउ यू अगेन बिकम अ स्टैंडअलोन एंटिटी. नेटवर्थ है सिर्फ 2 crores, उसको कंपेयर करो विद 250 crores, यू लाइक हमारा तो कोई नेटवर्थ ही नहीं है, वी डोंट वांट टू फॉलो इंड AS एनीमोर. लेकिन आपने इंड AS एक बार तो अप्लाई कर दिया ना, now you cannot roll it back. Now you have to keep on following the ind AS. And to be very honest, this is the right thing to do also. We don't want companies to keep on switching from one set of accounting standards to another set of accounting standards. See, try to understand that also. अगर ये A प्राइवेट लिमिटेड है, उसने इंड AS फॉलो किया, फिर इन्होंने शेयर सेल कर दिया, तो वापस से वो लोग रेगुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चले गए. फिर 1 साल के बाद दूसरी कंपनी आएगा, हमको आपके 60% शेयर्स खरीदना है, और वो वापस से लिस्टेड कंपनी के सब्सिडी हो गई, लाइक हाँ अब हम इंड AS फॉलो करेंगे. सो नाउ दे आर स्टार्टेड फॉलोइंग इंड AS. कुछ साल के बाद वो लोग भी चले गए, यू आर लाइक नहीं अब इंड AS नहीं, अब हम रेगुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. क्या हो रहा है ये, कभी AS कभी इंड AS? दिस इज नॉट रियली मेकिंग सेंस, एंड दैट्स द रीजन दे हैव मेड इट वेरी क्लियर कि एक बार आपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट कर दिया, you have to keep on following the ind AS. So you cannot roll back the ind AS. Keep on following the Indian accounting standards. Comfortable? Yes. Right. So this is giving us a fair idea about what Indian accounting standards are all about. We now know what is the numbering system of the ind AS, so that the next time when we are discussing any ind AS, कोई भी confusion ही नहीं होना चाहिए कि IAS वाला कन्वर्ज हम पढ़ रहे हैं या IFRS वाला कन्वर्ज आप पढ़ रहे हो. नंबर सिस्टम देख के हमें पता चल जाएगा कि ये IAS वाला है, ये IFRS वाला है. ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द IFRS. दैट इज येट अनदर मिथ व्हिच इज देयर कि एग्जैक्टली IFRS ही एग्जैक्ट IFRS नहीं है. काफी जगह पे डिफरेंसेस हैं जिसको हम कहेंगे कार्व आउट्स. सो एट सर्टेन प्लेसेस वी हैव deviated and it was necessary. अगर सेम का सेम ही रखना था तो फिर conversions करने की क्या जरूरत थी? You could have gone for adoption, but we went for conversions. Conversions basically is a gradual system of meeting of minds, isn't it? That's what normally happens. जैसे real life में भी basically जो process चलता है, कोई भी relationship अगर है कोई नया, the process which is going on, it is the process of conversions, right? So many times it will happen that you will say, for example, it happens many a times with me. My wife will say कि मुझे ये चीजें तुम्हारी जरा भी पसंद नहीं है, and I'll be also like कि मुझे भी ये चीजें पसंद नहीं है. So हमने एक लिस्ट बना दिया कि इतनी हमें चीजें पसंद नहीं है. फिर क्या होगा? What is the process of conversions? The two of us will sit down and talk कि भाई मैं कितने changes ला सकता हूँ मेरे में, और तुम कौन से changes ला सकते हो. But certain changes are very fundamental. ये तो मैं change करूंगा ही नहीं, ये तो मेरा ऐसा ही रहेगा. And my wife will also say the same thing, ये भी मैं change नहीं करने वाली, and then we accept it क्योंकि इतना तो change हुआ ना. क्या है वो? What is that? It's a process of conversion. So basically you're doing a process of conversions where there is a gradual meeting of mind where we are discussing कि हाँ these are the things that I can incorporate, लेकिन ये तो बहुत ही basic nature ही है मेरा, ये तो change हो ही नहीं सकता, right? अगर ये change कर लिया तो फिर मैं ही नहीं रहूंगा. So that is how the case will be. So this is non-negotiable. तो उसको हम कहेंगे carve out, right? So that's a carve out कि ये तो change होने से रहा, लेकिन इतने changes तो हो गए ना. So that gradual process we say is the conversions process जो हमने इंडिया में किया है, where we went for the conversions. So be clear with 3 myths which are there for Ind AS. Number 1, Ind AS is not applicable for every companies. Don't be under a myth कि अब पुराने accounting standards सब गए, हमने जो अभी तक सीखा वो zero हो गया. ऐसा कुछ भी नहीं है. जो भी आपने सीखा है वो अभी भी उतना ही important है. Ind AS कुछ selected companies ही follow करने वाली, लेकिन ये selected companies itself is huge companies. They are all huge companies, and that's the reason
what we can say, what we can say, more than proportionate importance is given to the Ind AS. But if someone is telling us that sari companies ko Ind AS follow karna, it is wrong. Second myth which is there is that the Ind AS is exactly equal to IFRS IAS, which is also wrong. There are few differences which are referred as the carve-outs. And finally, the third myth is that I can discontinue Ind AS anytime I wish. Not possible. You have to keep on following the Ind AS. एक बार शुरू कर दिया उसका implementation, you have to keep on doing. It's like a one-way street, right? It's a one-way street. वो Bollywood movies में होता है ना, कुछ plots ऐसे होते हैं. For example, the hero is wants किसी gang में है, and मतलब ये बहुत common story होती है. He's part of some gang and then he falls in love with some girl and now he wants to leave that gang. फिर वो जो gang का leader होगा उसको मिलने जाएगा कि अब मुझे आपके साथ कुछ काम नहीं करना है, अब मुझे life में settle होना है. और फिर वो कहता ना that gang leader कि तुम आते हो अपनी मर्जी से लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से. Something like that is there in the Ind AS. आपने भले ही उसको implement कर दिया लेकिन आप उससे छूटने वाले नहीं हो, right? So it's basically a one-way street insofar as Ind AS is considered. Okay. Yeah, what happened? कुछ नहीं. तुम भी अपनी मर्जी से ही आए हो. But you can definitely leave, right? Yeah, now some of the basic things that we should really understand with Ind AS, क्योंकि आप लोगों के लिए क्या हुआ है, all of a sudden Ind AS आ गया है, so you should be clear with certain concepts which are there in the Ind AS. और ये जो concept है, वो they are very, or you can say regular concepts which you should be aware. क्योंकि next time अगर कोई current asset की बात करते हैं या non current asset की बात करते हैं, there should not be any confusion कि current asset क्या है, non current asset क्या है, क्योंकि ये भी कुछ concepts हैं जो under Ind AS system they have undergone a change. 11th में जब हमको सिखाया था, right, current asset, non current asset, तो 11th standard में ऐसा कोई word ही नहीं था. We used to say long term, long term, short term, current, right, fixed asset. Yeah, so those are the words that we were using. What was taught to us? Something within 12 months. हमें पूरा ऐसा दिमाग में घुसा के रखा है कि कुछ 12 months में अगर वो एसेट रियलाइज हो जाए या 12 months में अगर उसका हमें पेमेंट करना है तो करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, बाकी सब लॉन्ग टर्म. कोई वर्ड नहीं था नॉन करंट जैसा. बट नाउ we do have something known as current asset and non-current asset, and their meanings are pretty different than what we have traditionally understood. So ये सिर्फ 12 months वाली condition तो एक ही condition है. There are a lot many other situations also where that asset can be considered to be a current asset. There are a lot many other situations where it can considered to be a current liability. So सिर्फ 12 months वाला नहीं है, 12 months वाला तो definitely है ही, लेकिन उसके अलावा भी दूसरी situations हैं. So this is something that we are discussing with reference to Ind AS 1. So आप समझ सकते हो Ind AS 1, it is something that is converged with IAS 1. The title of IAS 1 actually is Presentation of Financial Statements, which basically explains that how financial statements should be presented. कौन से अलग अलग हेड्स होने चाहिए, हेड्स के अंदर कौन कौन सी आपको आइटम्स दिखानी है, तो हम वो हेड्स समझ रहे हैं. बैलेंस शीट में जो हेड्स रहता है ना, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज. So what exactly do we mean by these terms? So what exactly is a current asset? Let's understand that first. It says that Ind AS 1 provides that an entity should classify an asset as current. Now, when can you classify an asset as current? When it expects to realize the asset or intends to sell or consume it in its normal operating cycle. अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में ही उसका रियलाइजेशन हो जाएगा या उसको आप सेल कर दोगे या तो आप उसको कंज्यूम कर दोगे, उसको हम कहेंगे करंट एसेट. Now, what exactly is an operating cycle then? What do we mean by operating cycle? Operating cycle,
basically we understand that as the time taken for cash to get converted back into cash. This is what only commerce people can understand this, where the cash again gets converted back into cash. So अगर आप manufacturing industry में हो, right? So आपने पहले raw material खरीदा. So what is your raw material holding period? क्योंकि raw material खरीदा फिर तुरंत ही उसका हम production के लिए उसको issue नहीं कर देंगे. So there will be a raw material holding period. फिर एक WIP का भी पीरियड रहेगा, फिर फिनिश गुड्स का भी पीरियड रहेगा, फिर डेटर्स का कलेक्शन पीरियड रहेगा. ये सबको हम ऐड कर देंगे और जो टोटल आएगा दैट इज योर ऑपरेटिंग साइकिल, राइट? वी विल अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग साइकिल ओवर हियर ऑन ग्रॉस बेसिस. वो क्रेडिटर वाला हमें माइनस नहीं करना है. वी हैव टू टेक द रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस द WIP कन्वर्जन पीरियड प्लस द फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड प्लस द डेटर्स कलेक्शन पीरियड. ये सबको ऐड करके जो फाइनल फिगर आएगा वो है आपका ऑपरेटिंग साइकिल. सो मान लो, जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, मान लो आपका ऑपरेटिंग साइकिल आया 20 months. If your operating cycle is 20 months, any asset that is expected to get realized within 20 months or sold within 20 months or consumed within 20 months will be considered to be a current asset. So अगर वो 12 months से ज्यादा आ रहा है तो भी वो current asset हो सकता है अगर वो आपकी operating cycle में consume होने वाला है, right? Because there can be certain companies जिसका operating cycle is really more than even a year. ऐसे कुछ कंपनीज हो सकती है जिसका जेस्टेशन पीरियड ज्यादा है तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल भी ज्यादा आएगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट सम रेसिडेंशियल फ्लैट्स एंड देन यू आर गोइंग टू सेल इट, तो वो बेसिकली आपका इन्वेंट्री रहेगा. सो यू आर इनटू दिस कंस्ट्रक्शन बिजनेस, सो दैट इज द रीजन योर ऑपरेटिंग साइकिल may turn out to be more than 12 months. So in such a situation, I will still consider that to be a current asset, right? For example, मैंने credit basis पे sell किया और मेरे डेटर्स को कहा कि तुम 15 महीने के बाद पेमेंट करो और मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है 20 months. तो ये जो डेटर मुझे 15 months के बाद पेमेंट करेगा इसको मैं क्लासिफाई करूंगा करंट एसेट, क्योंकि वो रियलाइज होगा विद इन माई operating cycle, and my operating cycle is 20 months and the debtor will pay in 15 months. That means it is getting realized within the operating cycle, and that's the reason it is a current asset. भले ही वो 12 months से ज्यादा है लेकिन वो नॉन करंट नहीं होगा, वो करंट एसेट होगा. B, they say it holds the asset primarily for the purpose of trading. ट्रेडिंग के लिए आप जो भी एसेट होल्ड करते हो वो हमेशा होगा करंट एसेट. यहाँ पे बेसिकली आपकी इन्वेंट्री इंक्लूड हो जाएगी. सो ऑल योर इन्वेंट्री आइटम्स विल बिकम करंट एसेट. कुछ इन्वेंट्री आइटम्स ऐसी होती हैं विच इज वेरी स्लो मूविंग, सालों साल निकल गए फिर भी वो सेल नहीं हुआ. इट डज नॉट मीन कि वो अब नॉन करंट हो गया, वो रहेगा करंट एसेट. इट विल रिमेन करंट एसेट ओनली. फॉर एग्जाम्पल, यू गो टू सम ज्वेलरी हाउस, कल्याण ज्वेलर्स या CH ज्वेलर्स, ऐसे बड़े बड़े जो ज्वेलरी हाउसेस जो बड़ौदा में, यू गो ओवर देयर, तो वो डिस्प्ले में रखते हैं ना सब ज्वेलरी, तो फिर उनका प्राइस टैग देखते हो आप तो 5 lakhs 10 lakhs 15 lakhs. सो वी रियली एडमायर द ज्वेलरी एंड ऑल. फिर आप 6 महीने के बाद जाओ वो अभी भी वहाँ ही है, अब 2 साल के बाद जाओ वो अभी भी वहाँ ही है, राइट? अभी भी वो सेल नहीं हो पाया, उसका प्राइस टैग ही इतना हाई है कि अभी भी उसको उसका बायर नहीं मिला. Does this mean that these jewelry pieces, क्योंकि वो 12 महीने से ज्यादा वहां पे रह गए तो वो सब नॉन करंट हो गए? नो. अल्टीमेटली वो ज्वेलरी हाउस का इंटेंशन क्या है? टू सेल इट, टू ट्रेड इन इट, एंड दैट्स द रीजन इट विल रिमेन a current asset, isn't it? It happens even in what you can say watches also. गए हो आप कभी वॉच शॉप्स में? रोलेक्स की जब वॉच देखते हैं हम, and they look at and they tell us the price tag, we're like, oh my god, and then we make up our mind कि एक दिन आएगा when I'll buy this watch. मन ही मन में we just tell ourselves. और फिर हमारा ऐसा है कि जितनी बार भी वहां से पास होंगे ना तो एक बार तो उसको कहेंगे यार वो घड़ी एक बार फिर थोड़ा इंस्पिरेशन चाहिए, तो वो घड़ी वापस से एक बार दिखा दो, राइट? और वो हर बार आपको वो घड़ी दिखा दो. इतनी महंगी है कि कोई अभी तक आया नहीं उसको खरीदने के लिए, एंड यू आर लाइक मैं ही उसका बायर हूं, आई एम गोइंग टू बाय दिस. सालों साल चले गए, राइट? वो घड़ी अभी भी वहां का वहीं है. इट इज स्टिल गोइंग टू रिमेन
अ करंट एसेट, क्योंकि उस शॉट का इंटेंशन है उस घड़ी में ट्रेड करना, एंड दैट्स द रीजन यहाँ पे 12 मंथ्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, इट विल रिमेन अ करंट एसेट. In C, they are saying it expects to realize the asset within 12 months after the reporting period. Finally, जो हम 11th में पढ़े वो आया, right? So we were like, ये क्या नया नया आ रहा है, जो अभी तक पढ़ा उसका क्या हुआ? तो ये रहा आपके सामने, right? So 12 months में जो realize होने वाला है, that is definitely a current asset. And finally, they said D, they said the asset is cash or a cash equivalent as defined in Ind AS 7. Ind AS 7 is like the cash flow statement. Cash flow statement, जिसमें cash equivalent है. We understand cash equivalent as any short-term security whose maturity is 3 months or less. जिसका 3 months या उससे कम का maturity है, we consider that as a short-term security. So the asset is cash or cash equivalent. Cash या cash equivalent हमेशा current asset ही रहेगा. भले ही आपने cash जाके लॉकर में रख दिया है, right? होता है ना हमारा बैंक में लॉकर्स, वहां जाके हम कैश रख के आ गए हैं, जो डिमोनेटाइजेशन के टाइम सब बाहर आ गया था, अब वापस से हमने कमा लिया ना, सब वापस ले आए, वापस से हम लॉकर में जाके रखा है. सो वी हैव केप्ट दैट इन लॉकर. सालों तक आप वो लॉकर में रखते रहोगे, थोड़े थोड़े टाइम पे बैंक में जाओगे, लॉकर खोलोगे, देखोगे हाँ सब भरे हुए, लॉकर बंद करके वापस घर पे आ जाओगे. सो दिस इज व्हाट यू कीप ऑन डूइंग. स्टिल दैट कैश इज अ करंट एसेट. भले आपने वो कैश सालों तक यूज नहीं किया, आई विल कंसिडर दैट एज a current asset. But even this cash can become non-current asset. तो exception दिया. They say unless the asset is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period. अगर कैश के यूटिलाइजेशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है तो फिर वो कैश नॉन करंट एसेट बन जाएगा. अगर वो रेस्ट्रिक्शन ऐसा है जो बैलेंस शीट दिन से 12 मंथ्स के बाद हटेगा. So they are saying it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting date. For example, let us say one of the directors of the company, that person has committed some fraud, और उसके सामने कोई कोर्ट का केस चल रहा है और फिर उसको इंडिया के बाहर जाना है, and the court is like that we can't allow you to, आपके ऊपर तो ऑलरेडी इंडिया में केस चल रहा है, तो we cannot allow you to go outside India. So that person is saying, is there any possibility? So they are saying, okay, अगर 5 crores of rupees आप deposit कर देते हो, right, in an escrow account, then we may allow you to go outside India. So what will happen is you will deposit 5 crores of rupees in an escrow account. तो आपने escrow account के अंदर 5 crore rupees deposit किया, and the court is saying कि जब तक judgment नहीं आएगा, you cannot withdraw a single rupee out of this 5 crores. So I have deposited 5 crores and I'll have to wait till the judgment. इंडिया में केस चल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि जजमेंट कब आएगा, राइट? जजमेंट डेफिनेटली 12 मंथ्स के बाद ही आएगा. सो इट विल टेक इट्स ओन टाइम. तो ये जो कैश है जो एक्स्ट्रा अकाउंट में है, which you now no longer can withdraw, I will consider that as a non-current asset. भले ही वो कैश है, लेकिन उसके यूज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ गया, और वो रेस्ट्रिक्शन रिपोर्टिंग डेट से 12 मंथ्स तक है, राइट? And that's the reason I will consider it to be a non-current asset. Otherwise, regular cash जो आपके अकाउंट में है सालों साल तक, वो अगर आपके अकाउंट में, it will remain a current asset only. और बाकी जो भी assets हैं, they are all non-current. Any asset which is not a current asset by default will become a non-current asset. मतलब ये चार, अंडरस्टैंड, ये चार सिचुएशन, ये चारों चार कंडीशन आपको फुलफिल नहीं करनी है. ये चार सिचुएशन में से किसी एक सिचुएशन, कई कई आइटम्स तो एक से ज्यादा सिचुएशन में भी हो सकती है, देन दे विल ऑल बिकम करंट एसेट. और अगर वो करंट एसेट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट इट इज अ नॉन करंट एसेट. Similarly, when can I classify a liability as a current? Okay. It expects to settle the liability in the normal operating cycle. अब थोड़ा रिपीटेशन ही होगा, जो करंट एसेट में हो चुका है उसका ये करंट एसेट में वो रियलाइज होने वाला था, यहाँ पे हमें उसको सेटल करना. तो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है 20 मंथ्स और मैंने क्रेडिट बेसिस पे खरीदा है, एंड माय क्रेडिटर इज सेइंग कि आप 15 महीने के बाद पेमेंट करना. Fine, I will make the payment now after 15 months, but 15 months is within my
ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये क्रेडिटर नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, ये क्रेडिटर करंट लायबिलिटी। It holds the liability primarily for the purpose of trading. हमने already देख लिया, anything which is for the purpose of trading, I will consider that to be current in nature. Then they say the liability is due to be settled within 12 months after the reporting period. So that is the age-old criteria that we know. And finally, in D, they are saying it does not have an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date. The word used is it does not. अगर ऐसा unconditional right आपके पास है, right? So you should not have this unconditional right. If you have this unconditional right that you can defer, then it will become a non-current liability. If you do not have this unconditional right, then it will be considered to be a current liability. क्या exactly वो लोग कह रहे हैं यहाँ पर? Let us say there is some company, A Limited, uske let's say 9% debentures, right? It has issued some 9% debentures and these debentures are to be redeemed. So मुझे redemption करना है. And the redemption date is 30th June 2023. And I'm preparing my balance sheet on 31st March 2023. So मैं 31st March 2023 को balance sheet बना रहा हूँ और ये जो debentures है उसको redeem करना है on 30th June 2023. मतलब बैलेंस शीट देन के 3 महीने के बाद इसका पेमेंट मुझे कर देना है. So it is going to be settled within 12 months, right? And that's the reason I should classify this debentures as a current liability, right? So I should be classifying this as a current liability. But ये जो debentures मैंने issue किया है, अभी debenture का ना एक contract रहता है, and in contract there are a lot of conditions. और debentures में एक condition है that the directors, by calling a board meeting, can defer the payment by 1 year. So ये उनको एक right दिया गया है. So जब हमने debentures issue किया तब हमने debenture holders को कहा कि 30th June 2023 को हम redeem कर देंगे, लेकिन ये clause है कि अगर हम चाहे तो 1 साल redemption delay कर सकते हैं. And let us say the company has decided to exercise this particular option. So because they will exercise this option, उनका redemption date अब हो जाएगा 30th June 2024 और balance sheet दिन से अगर आप देखो then it is beyond 12 months. And that is the reason this can now be considered to be a non-current liability. I can consider this to be a non-current liability. इसलिए current liability की definition में उन्होंने लिखा है कि ऐसा right उनके पास नहीं होना चाहिए. They say it does not have this unconditional right to defer the payment. If they have a right of deferring the payment, then it is possible for it to become a non-current liability. लेकिन मान लो डिबेंचर में ऐसा कोई क्लॉज ही नहीं है. 30th June 2023 मंथ का फाइनल, यू कैन नॉट डिले द रीपेमेंट, तो फिर ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली करंट लायबिलिटी, राइट? So that's the reason they use the word that it does not have the unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date. And then they say that terms of a liability that could, at the option of the counterparty, result in the settlement by issue of equity instruments do not affect its classification. Current liability है या non-current liability, वो ultimately अगर वो equity shares में convert हो जाने वाले हैं, it makes no difference. Getting it? वही example, 31st March 2023, I'm preparing my balance sheet. और ये जो मेरे debentures है ना, वो 30th June 2023 को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं. दे आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. सो किसी ने आर्ग्यूमेंट किया कि एक बार तो वो इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे, फिर तो वो परमानेंटली आके हमारी बैलेंस शीट में बैठ जाएंगे, राइट? बिकॉज वंस द डिबेंचर्स गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. और इक्विटी शेयर कैपिटल तो परमानेंटली, जब तक आप बाय बैक नहीं करोगे या कंपनी लिक्विडेट नहीं होगी, तब तक तो वो परमानेंटली बैलेंस शीट में रहेंगे. तो ये तो नॉन करंट लायबिलिटी हो गई.
क्योंकि 30 जून 23 को आप इक्विटी शेयर्स इश्यू करोगे और इक्विटी शेयर्स तो 12 महीने से ज्यादा बैलेंस शीट में रहने ही वाला है, तो इसको आप नॉन करंट लायबिलिटी कंसिडर करो। ऐसा आपको जरा भी करना नहीं है। अगर उसका रिडेम्पशन 30 जून 23 को ड्यू है तो उसका क्लासिफिकेशन होगा करंट लायबिलिटी। Doesn't matter even if you are going to issue equity shares. So that's what that para says. The terms of a liability that could, at the option of the counterparty, result in the settlement by issue of equity instruments does not affect its classification. वो current liability ही रहेगा, because ultimately वो redeem हो रहा है। फिर वो कैश में रिडीम हो रहा है या इक्विटी शेयर्स में रिडीम हो रहा है, उससे उसका करंट या नॉन करंट के क्लासिफिकेशन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम तो यही कहेंगे इट इज ड्यू फॉर रिडेम्पशन, एंड बिकॉज इट इज ड्यू फ्रॉम रिडेम्पशन विद इन 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, आई विल शो इट अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटी। ओके, let's take a typical case and understand how shall we carry out the classification. Let's say you have taken a loan from SBI, right? So SBI से आपने loan लिया है, and you have arranged this loan, let's say on 1st January 2023, and this loan is for 5 years. तो आपने एक 5 साल का लोन लिया है from State Bank of India, and this loan is arranged on 1st January 2023. Now, say on 20th March 2023, आपको SBI से नोटिस मिला, and the notice is immediately repay the loan. So एक नोटिस आ गया SBI से कि immediately आओ और लोन को repay कर दो, and I am preparing my balance sheet on 31st March 2023. Of course, the moment I got this notice from SBI, I stopped all the work. 5 साल का लोन लिया और बैंक अचानक से कहेगा कि अभी आके लोन को रीपे कर दो, तो ऑब्वियसली आई विल रश टू द बैंक एंड आई टॉक टू द बैंक कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है. सो द बैंक वाज लाइक कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट नहीं किया, और ये डॉक्यूमेंट्स के लिए आप पूरा लोन ले लोगे क्या? सो आई एम जस्ट टेलिंग, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम दो, I will provide you with all the documents. So I gathered all the documents, I provided with the bank, and then let us say on 3rd April 23, on 3rd April 2023, SBI revoked the notice. SBI is now saying कि fine, अब आपको immediately pay करने की जरूरत नहीं, आप 5 साल के बाद payment करना. So this is what happened. Question is, 31st March 2023 को how should I show this loan? Should I show this as current liability because it was immediately repayable? लेकिन 3rd April को notice revoke हो गया, now it is not immediately repayable. So should I consider this and show the same loan as a non-current liability? And let me tell you, अभी financial statements बन रहे हैं, उसका audit भी होगा, अभी उसका अप्रूवल नहीं हुआ, राइट? सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर स्टिल नॉट अप्रूव्ड. दिस इज द प्रैक्टिकल सिचुएशन. क्या होना चाहिए क्लासिफिकेशन? एवरीवन अंडरस्टूड द केस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आपने लोन लिया, बैलेंस शीट बनाने के पहले ही नोटिस आ गया कि अभी आके पे कर दो, और फिर बैलेंस शीट दिन चला गया और 3-4 दिन के बाद बैंक कहे आप पेमेंट करने की जरूरत नहीं, अब आप आराम से पेमेंट करना. प्रॉब्लम इज 31st March 2023 का ये लोन का क्या स्टेटस है? शुड आई शो दिस एज करंट लायबिलिटी? शुड आई शो दिस एज नॉन करंट लायबिलिटी? व्हाट इज योर टेक? पढ़ने की जरूरत नहीं है अंदर क्या लिखा है, नो, वो तो हम डिस्कस करने वाले हैं. आपका खुद का क्या टेक है, क्या होना चाहिए इसका क्लासिफिकेशन? फिर देखते हैं व्हाट इज आवर इंडिया सेइंग. व्हाट डू यू फील? 11 से हम अकाउंट्स कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? व्हाट शुड वी डू हियर? Should we give importance to what is there on 31st March, or should we give importance to what happened
on 3rd April and then change our understanding of the balance sheet date. Current liability, okay. It's fine. There is no wrong, right, nothing. What do you feel? That is what the question was, no? And what we feel is never wrong. It's always right. Anyone else? What do others feel? ये lecture कब खत्म होगा? पहले दिन ही कितना सारा हो गया. मुझे तो 2016 करना था, कहाँ बैठ गया मैं यहाँ? ऐसा है कोई? किसी को लग रहा हो? बाकी कुछ लगता ही नहीं है. ऐसा तो नहीं चलेगा. And what is the difference between offline students and online students? अगर आप यहाँ पे आके भी अगर online students जैसा behave करोगे, हाँ? Current liability, okay. Everyone else? Everyone feels current liability? Non-current liability? Someone said, कौन था? Non-current liability? You said non-current? किसी ने कहा था ना non-current? किसी ने कहा ही नहीं? सबको लगता है current liability? Yes? See, what has happened really over here is the stand taken by IS 1 and the stand taken by India's 1. It turns out to be different. IS 1 says it is current liability. ये जो आप सारे आंसर्स दिया ना current liability, आप लोग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जवाब दे रहे हो कि इट्स अ करंट लायबिलिटी. जो इंडिया में जो इम्प्लीमेंट एक्चुअली होने वाला है, और हम लोग सब इंडिया में ही है, दे आर सेइंग इट इज नॉन करंट लायबिलिटी. ये क्या है? इट्स अ कार्व आउट. क्या है? कार्व आउट. We understand a carve out where our accounting standard will deviate from what international accounting standard says. International accounting standard says, and as you guys also said, yeah, what matters is the status on 31st March. उसके बाद क्या हुआ वो क्यों देखने का? 31st March को क्या था? उसको immediately repay करना है. मतलब वो है current liability. While our accounting standard says can know what happened after the balance sheet date. What happened after the balance sheet date? It is giving us evidence of the facts and circumstances on the balance sheet date. आपको लग रहा था कि लोन रीपे करना है, लेकिन बैंक को पता था कि क्लाइंट से रीपे नहीं करवाना है, उसको भगाना है कि ये डॉक्यूमेंट्स बाकी है, लेकर आओ. सी, अगर वो एसबीआई वाले आपको फोन करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स बाकी है, प्लीज आओ, दे जाओ, आपका क्या रिएक्शन रहेगा? हाँ आते हैं, दे जाएंगे. 3 दिन के बाद वापस फोन आएगा कि आप आए नहीं डॉक्यूमेंट देने के, क्योंकि लोन तो मिल गया ना. जब तक लोन नहीं मिलेगा हम दौड़ेंगे, लेकिन एक बार लोन मिल गया अब तो बैंक को भागना पड़ेगा हमारे पीछे. सो दिस इज आवर थिंग. सो बैंक ने क्या किया? नोटिस भेज दिया, इमीडिएटली रीपे करो. और फिर क्या हुआ? अब आपने दौड़ना शुरू कर दिया, राइट. सो बैंक का तो कभी इंटेंशन था ही नहीं आपसे पैसे वापस लेने का, लेकिन बैंक को पता है कि ये इंडिया है और इंडिया में ऐसे ही काम होता है. उनको कहो कि इट इज इमीडिएटली रिपेएबल, तब जाके वो सारे काम ढंग से करेंगे और फिर कह देंगे नाउ नॉट रिपेएबल, isn't it? So this is how the entire thing was, and that is the reason our accounting standard argues that this is a non-current liability. क्योंकि अगर वो सचमुच रिपेएबल था तो बैंक विल नेवर रिवोक द नोटिस. अगर मान लो आपने कोई फ्रॉड किया है एंड बिकॉज ऑफ दैट द बैंक सेज इट इज इमीडिएटली रिपेएबल, तो क्या लगता है आपको 3rd अप्रैल को वो नोटिस वो रिवोक हो जाएगा? नो, वो नोटिस रिवोक नहीं होगा. नोटिस का रिवोकेशन इटसेल्फ शोज दैट द इंटेंशन वाज never to ask for the repayment. The intention was कि कुछ clauses या कुछ conditions अभी भी आपने fulfill नहीं की थी, वो client fulfill कर दे. And that is the reason. So we will give importance to the revocation of the notice after the balance sheet date
and we will consider it to be a non-current liability. Okay? substance over form जैसा है. हाँ कह सकते हो, लेकिन it's not exactly substance over form, because international accounting standard will also consider substance over form only, right? So we can't really say कि उन्होंने consider नहीं किया और हमने consider कर लिया. What they say is that what matters is the status on the balance sheet date. So they are also right in their own way कि 31st March को तो भले ही 5th April या कुछ भी हुआ हो, 31st March को तो वो immediately repayable था, तो शेयर होल्डर्स को वो हमें कहना चाहिए किसी 31st March को तो repayable था, कुछ conditions थी जो हमने fulfill नहीं की थी. So you should tell them. So they are also right in their own way. While we are also right in our own way कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि शेयर होल्डर्स को कहने की जरूरत है, भाई कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया था तो वो शेयर होल्डर भी हंसेगा हम, वो तो हम भी नहीं देते ना, आपने नहीं दिया तो कौन सी बड़ी बात. So this is how it is. So it's not a very grave situation. So we say it is non-current. So that was the carve out that we were discussing. It says that IAS 1 requires that in case of a loan liability, if any condition of the loan agreement, which was classified as non-current, is breached on the reporting date, such loan liability should be classified as current. Where the breach is rectified after the balance sheet date, IAS requires loans to be classified as current. So भले ही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भले ही हमें पता चल गया कि अब वो नोटिस रिवोक हो गया है, लेकिन वो लोन का स्टेटस चेंज नहीं होगा, वो करंट का करंट ही रहेगा. IAS 1 clarifies that where there is a breach of a material provision of a long-term loan arrangement on or before the end of the reporting date, with the effect that the liability becomes payable on demand on the reporting date, the entity does not classify the liability as current if the lender agreed after the reporting period and before the approval of financial statements for issue not to demand payment as a consequence of the breach. So बैलेंस शीट डेट पे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, लेकिन बाद में वो रेक्टिफाई कर दिया हमने. We will not classify it as current. We will continue to classify it as non-current liability. And another thing, whenever there is a carve out, you also have to give a clarification. So institute has to, I'm talking about the ICAI, जिसने draft किया, they have to come up with an explanation. बस मन हुआ और कार्व आउट कर दिया ऐसा भी नहीं चलेगा. You have to give a logical reason कि क्यों इंडिया में ये कार्व आउट की जरूरत है. अगर इंटरनेशनली सारी कंपनीज जो IAS फॉलो कर रही है वो सब करंट लायबिलिटी कह रहे हैं, तो ऐसा तो इंडिया में क्या हो गया कि आप उसको नॉन करंट लायबिलिटी कह रहे हो. So that is the reason which they have given. They say under Indian banking system, a long-term loan agreement generally contains a large number of conditions. Some of these conditions are substantive and some conditions are procedural. You know, बहुत सारी conditions. It's a fact actually. In India, getting a loan is a big task. It's a fact. Especially commercial loan. Housing loan तो फिर भी मिल जाता है, लेकिन commercial loan अगर इंडिया में लेना है, it's a hell of a job. So there are so many documents और इतना सारा valuation, इतना सारा वो लोग कहेंगे कि एक टाइम पे तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे लोन चाहिए ही नहीं. You know, this is the end conclusion towards which you will start moving. So it's very tedious. So some conditions are substantive. Substantive matlab they are major conditions, and some are procedural. Generally, customer-banker relationships are developed whereby in any procedural breach, a loan is generally not recalled. What they are saying is that in India, customer-banker relationships are extremely well developed. We just cannot deny this fact. What do you say? Customer and banker relationship? Can you just walk into the bank manager's, the branch manager's office just like that? अगर आप किसी बैंक में गए हो, SBI या कहीं पे, और you are not satisfied with the service or something, and you are like, who कौन है यहाँ का branch manager? And you just move into the branch manager's cabin. जा सकते हो इंडिया में? Of course जा सकते. कौन कह रहा है no? Right? You will definitely flung the door open and you will be inside. कि ये क्या चल रहा है, ये कोई काम करने के लिए यहाँ पे तैयारी नहीं है, क्या हो रहा है?
especially SBI में तो it is very common. I have this one bank account, branch का नाम नहीं लेता मैं, लेकिन वहां पे जाना, like पहले से मुझे स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा यार, वो वहां पे मुझे जाना है, because I know वहां पे जाएंगे, ये टेबल पे काम नहीं होगा, वो टेबल पे होगा, यू गो टू दैट टेबल होगा, वो वहां पे होगा, वो पता ही नहीं चलेगा कौन से टेबल पे अल्टीमेटली काम होने वाला है. सो वहां पे अगर मुझे जाना है, ऑलवेज सेंड माय फादर. वो माय फादर विल गो ओवर देयर एंड देन ही विल ब्लैकमेल देम बाय सेइंग आई एम अ सीनियर सिटीजन. और फिर वो जैसे ही कहेंगे ना सीनियर सिटीजन, फिर सारा काम हो जाएगा, फिर काम सब मेरा ही हो रहा होगा. दिस इज हाउ आई डेफिनेटली डील विद दैट पर्टिकुलर ब्रांच. ऐसा कहा जाता है कि नीरव मोदी फर्स्ट वेंट टू SBI फॉर अ लोन. फिर SBI वालों ने नीरव मोदी को कहा कि अभी आपको वो टेबल पे जाना पड़ेगा, ये टेबल पे काम नहीं हो रहा, तो वो PNB चला गया. वो पूरा फ्रॉड PNB में हुआ. Have you heard about this? वो SBI वालों ने वो जो डेस्क पे बैठा था ना, उसको पार्टी दी कि बच गए, थैंक्स टू यू, isn't it? कि उस आपने नीरव मोदी को दूसरे टेबल पे भेज दिया कि अभी यहाँ काम नहीं होगा, आप तुम वहां पे जाओ. दैट पर्सन इज कमिंग एंड मुझे इतना बड़ा लोन चाहिए वाला है कि नहीं, अभी तो मेरा रिसेस का टाइम, वो दूसरे टेबल पे जाओ. तो एकदम खफा हो गया ना नीरव मोदी का, नहीं अब तुमसे नहीं लेना, हम तो PNB से काम करेंगे. फिर वो घोटाला पूरा PNB में हुआ, SBI बच गया. एंड बिकॉज थैंक्स टू दैट डेडिकेटेड एम्प्लॉय, दे डिसाइडेड कि नहीं, हमें इसको प्रमोशन देना चाहिए, इसको पार्टी देना चाहिए, इसने बचा लिया हमें. So what has happened, what we are saying is that the relationships are really well developed. So a breach is rectified after balance sheet date and before the approval of the financial statements. Carve has been made because it is felt that if the breach is rectified after the balance sheet date and before the approval of financial statements, it would be appropriate that the users are informed about the true nature of the liabilities, be non-current liabilities and not current liabilities. अब देखते हो, इंडियाज वन ऐसा कह रहा है कि शेयर होल्डर्स को कहो कि बैलेंस शीट दिन पे ये करंट लायबिलिटी है, और सॉरी IS1, एंड इंडियाज वन इज सेइंग कि ये कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब क्या मैटर करेगा, बैलेंस शीट दिन तो चला गया. जब एनुअल रिपोर्ट मेरे हाथ में आया, तब उसका क्या स्टेटस है, वो हमें शेयर होल्डर्स को कहना चाहिए. डोंट यू फील बोथ आर quite logical in their own sense, right? So when I give you the annual report, IS1 says कि you tell them कि balance sheet दिन पे ये current था, right? And India's one is arguing कि क्या जरूरत है, जब तुम्हारे हाथ में annual report आया तो क्या मैटर करता है, 31 मार्च का उसका स्टेटस या अभी आपके हाथ में जब annual report आया तो उसका latest status क्या है. So someone may say कि latest status matters. So that's the reason we are sticking to that school of thought. कि latest status matters. So we will say it is non-current liability. Someone can argue कि नहीं, what matters is the status on balance sheet. So we will like to show it as current liability. But as far as Indian companies are considered in this kind of a situation, we will classify it as a non-current liability. Shall we end here for today? Yes.